तहे दिल से हमारे विभाग की तरफ से और सभी की तरफ से तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप इस हर स्टोरी सेशन में आपने आना चुना और इससे इस महिला अधिकार के मुहिम को और बहुत बड़ा संबल मिलेगा। ये केवल छोटी बात नहीं है सर, आप हमारे बीच में मौजूद हैं, ये सभी को बहुत ज़्यादा एक थ्रिल दे रहा है, बहुत ज़्यादा उत्साह दे रहा है। द फाउंडेशन ऑफ हर स्टोरी, इसकी नींव किस प्रकार से रखी जाती है, इसके जो फाउंडेशन के मुख्य आधार बिंदु है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन फ्यूल्स एस्पिरेशन एंड बिल्ड्स अवेयरनेस। Skill fosters innovation and open pathways for women to realize their potential. Beyond individual growth, creating opportunities for networking connects women with peers, mentors, and investors. However, let us not overlook other critical factors: access to finance, mentorship, and systemic support, which are indispensable for sustained growth. What are the important pillars of women entrepreneurship? There are two important pillars: community and economic factors. Community factors include the journey often begins with seeking self-identity and social status. It is propelled by resilience, gender equality, and family support, empowering women to become role models. And then we have economic factors. They are advancements in technology, globalization, and supportive policies. They create fertile ground for innovation and market entry. These pillars ensure entrepreneurship thrives, fostering employment generation and a sustainable future. महिला उद्यमिता का क्षेत्र बिना चुनौतियों के नहीं है. There are challenges and hurdles. The path of women entrepreneurs is not without hurdles. Limited funding, inadequate support systems, and an unfavorable ecosystem are common challenges. Yet, women entrepreneurs persevere with resilience, adaptability, and innovation, building support networks, leveraging technology, and embracing failures as learning opportunities. These are the strategies that define their success. Then yet another challenge is securing resources. In Rajasthan, where tradition meets transformation, we recognize the importance of equipping women with the necessary resources. Government initiatives, financial tools, and digital infrastructure are being aligned to create a conducive environment. This effort is not just about removing barriers, but also about building bridges for women entrepreneurs to soar high and high. Supportive ecosystem is very essential. That is the main catalyst for change. जब तक सभी स्टेक होल्डर्स और पूरा इकोसिस्टम सपोर्ट नहीं करता, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा प्रगति जो है आसान नहीं होती. अ सपोर्टिव इकोसिस्टम इज़ वाइटल. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, incubators, accelerators, and community networks play a pivotal role in propelling women entrepreneurs forward. These initiatives, backed by government policies, ensure that women can thrive and continue to innovate. In Rajasthan, we aim to build such a system where women are not just participants, but leaders in the entrepreneurial ecosystem. राजस्थान सरकार कोई भी कदम नहीं चूक रही है जो इस क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने में जो सहयोगी न हो. एक कंसेप्ट है रिपल इफेक्ट. जब एक छोटी क्रांति दूसरी क्रांति को या एक छोटा इंप्रूवमेंट दूसरे इंप्रूवमेंट को जन्म देता है,
तो वो रिपल इफेक्ट होता है. एज वुमेन राइज दे इंस्पायर अदर्स, creating a ripple effect of empowerment. Mentorship, leadership and advocacy are the anchors of this chain. A single woman's journey can ignite a movement, birthing another her story. This is the power of collective change, one that transforms not just individuals but societies. Sir, as we are about to begin this session, let us reaffirm our commitment to fostering diverse and inclusive societies. Today's discussion will not merely be about acknowledging challenges, but celebrating triumphs and paving the way for sustainable progress. In the words of Margaret Thatcher, watch your thoughts, for they will become actions. Watch your actions, for they will become your legacy. Let this be our legacy, a world where women entrepreneurs thrive and lead us toward a more equitable future. इस सत्र में जब हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, then I am certain this session will leave us with invaluable insights, inspiring stories and actionable ideas to continue building a thriving ecosystem for women entrepreneurs. Let us look forward to a day of rich dialogues, impactful sharing and collective learning. Thank you very much. Thank you, Mr. Soni. हम माननीय मुख्यमंत्री जी का टोकन स्वरूप एक प्लांट भेंट कर स्वागत करेंगे. Thank you, Honorable Chief Minister, for gracing this session. We have with us Dr. Shwetanshu Bhushan, author and an associate professor in Lady Shri Ram College of Delhi. She's been teaching there for more than 2 decades. She has authored the book Breaking Boundaries, Women's Journeys in Rajasthan Cultural Tapestry. So we will formally launch this book. I request Honorable CM Sir to kindly launch this book. With the formal launch, I request Dr. Shwetanshu Bhushan to please say a few words. Honorable CM Sir, Honorable Madam Diya Kumari ji, respected Secretary Sir, distinguished guests at the dais, and the august audience present here. I sincerely thank the Raising Rajasthan Summit and the organizers for giving me an opportunity to speak and for my book release.
As the motto of this summit is replete, responsible and ready, it really fits very well in our very first session, Her Story, and especially for the women of Rajasthan. My book, Breaking Boundaries, Women's Journeys in Rajasthan's Cultural Tapestry, deals with the contemporary women of Rajasthan, and that too rural women, living at the different places, coming from the different communities of Rajasthan. Any work on gender, it's not easy to work. It has to be highly action-oriented, yet very sensitive. And as we heard from Mahen Soni sir and morning, that we women are reflection of each other, and it is really very important and vital to listen the stories of each other. We resonate each other. The success stories of Rajasthani women provide a glimpse into the changing world processes, effort, cooperation, and willingness of not only officials and government, but also of our society and nation as a whole to ensure an ethical and sustainable legacy in terms of gender equality. When women are seen, heard, talked to, and known, several life-inspiring stories are revealed by these rural and so-called, ordinary women. But they come with extraordinary clout, which is socially, politically, and economically illuminating. It's crucial to highlight the path-breaking stories of our Rajasthani women about their strength and resilience. My book talks about these stories, and I have taken several case studies of these women. They are the true stories of these inspiring women. I have met these women, and they have been talked about breaking the old norms, making life better for themselves in challenging circumstances. It is so inspiring that these oral narratives should be brought to all and the audiences globally, all over the world. They are also unaware, they are not even aware that they are the game changers for the society. These respondents do not have any idea when they were talking to me that their effort to change their livelihood is making the way for others in a rapid way. This perhaps is the real empowerment, when you take up the challenge within yourself, first at the individual level, then at the family level, and then within your community. So मेरी किताबों में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं उनकी खुद की, जिनसे मैं मिली अपने फील्ड ट्रिप के दौरान, उनसे बहुत सारे इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ लिए, और उन्हें ये पता भी नहीं है कि वो कितना बड़ा काम कर रही हैं इस समाज के लिए और उन्होंने क्या क्या किया है, क्योंकि वो एक साधारण से परिवार से आती हैं, अलग अलग जगहों से आती हैं, और जब उनको एक साथ करके हम लिखते हैं, और इसलिए बहुत ज़रूरी है इनकी स्टोरीज़ को डॉक्यूमेंट करना, तब पता चलता है कि कितना बड़ा चेंज वो ला रही हैं समाज में. Crossing these barriers, and these three barriers especially when we talk about at the individual level, then at the family level, and then at the community level. Crossing these three barriers is not at all an easy task for a rural woman especially. And my research focuses on that here. Society and history with a comparative eye. India is already on a progressive curve when it comes for representation for females. As sir said, 48% of the population is females. So when half of us are women and how we are progressing, it really impacts the economy of our nation. So I think where we need to go is having women characters that are ahead of the curve, and they should become the new normal. Thank you. Thank you, Dr. Bhushan. We have with us on this panel today a very special person, Ruma Devi. बाड़मेर के रेगिस्तान से रूमा देवी ने अपने हुनर से दुनिया जीत ली है.
अपने निजी जीवन में बहुत परेशानियों से गुजरकर उन्होंने कढ़ाई के काम से 30,000 महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। रूमा देवी ने 8वीं के बाद पढ़ाई बेशक ना करी हो, परंतु उन्होंने कला और व्यापार के संगम से सबको चकित कर दिया है। 10 महिलाओं से शुरुआत करके उन्होंने एक पुरानी सिलाई की मशीन खरीदी और एक छोटी सी संस्था का निर्माण किया है, जो इन दिनों में बहुत बड़ा संस्थान बन चुके हैं और देश भर में उनकी चर्चा हो रही है। 2019 में नीति आयोग ने इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया और कई अवार्ड्स प्राप्त करके आज ये आपके सामने गर्व से खड़ी हैं। जब हम आदर्श नारी की बात करते हैं तो रूमा देवी जैसी महिलाएं हमारी नज़र में ज़रूर होनी चाहिए। ये घर भी चलाती हैं, बिजनेस भी संभालती है, एनजीओ को भी लीड करती है। कौन कहता है ये किसी से कम है? रूमा देवी को तालियों से स्वागत कीजिए। रूमा देवी जी, आपकी लाइफ स्टोरी सुनने के लिए सब उत्सुक हैं। प्लीज टेक द फ्लोर। माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, समस्त मंचासीन और इस प्रोग्राम में पधारे हुए सभी श्रोताओं को मेरा राम राम। मैं बाड़मेर से आती हूँ। बाड़मेर के बारे में काफ़ी लोगों को मालूम है, पूरा डेजर्ट एरिया है और रेत के टिब्बों के बीच में दूर दूर ढाणियाँ में लोग रहते हैं। बाकी जगह पे इकट्ठे गांव में रहते हैं, लेकिन बाड़मेर में कल्चर थोड़ा अलग है। वहाँ पे दूर दूर एक एक ढाणी में लोग रहते हैं और वहाँ पे खास करके महिलाओं के पास में रोजगार का कोई संसाधन नहीं है। तो वो सुबह से शाम काम करती है, लेकिन अगर खुद के लिए 2 रुपये भी चाहिए होते हैं तो उनके पास में नहीं होते हैं। वहाँ से मैं आती हूँ और ऐसी ही एक ढाणी में मेरा जन्म हुआ 88 में। जब मैं 4 साल की थी तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी। 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया और जब भी मुझे टाइम मिलता मैं दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम ज़रूर सीखती थी, क्योंकि पहले हर घर में कसीदाकारी का काम होता था, चाहे माँ अपनी बेटी के लिए बनाती हो या पहनने के लिए कपड़े। तो ऐसे ही मैंने दादी से सीखा और 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी तो 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास में नहीं था। और शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा बेबी हुआ तो उसको सांस में प्रॉब्लम थी और अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, हम नहीं दिला पाए और उसको नहीं बचा पाए। तो उस समय लगा ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, ऐसे नेगेटिव विचार आने लगे कि मैं ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ। फिर लगा कि ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा है मैं कुछ काम करूँ जिससे मेरा घर भी चले और मेरा मन भी लगे। तो यही सोच के मैंने सुई धागा हाथ में लिया। 2008 में छोटे छोटे बैग बनाने शुरू किए, क्योंकि मुझे मार्केटिंग का कोई आइडिया नहीं था, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा कोई आइडिया नहीं था। इसलिए मैंने जो महिलाएं मायके जाएगी वो बैग जरूर लेके जाएगी, तो यही सोच के बैग बनाने शुरू किए। अब जो एम्ब्रॉयडरी का काम था वो सुई धागे से किया, लेकिन स्टिचिंग का काम था वो मशीन से होना था। मशीन मेरे पास थी नहीं और ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। तो उस समय मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर लगा कि नहीं, और भी बहनों को जरूरत है। तो फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमारे काम की शुरुआत हुई। तो 2008 में हमने 10 महिलाओं ने मिलकर शुरुआत की, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं थी, क्योंकि 10 महिलाओं के लिए काम कहाँ से आएगा। फिर हमने इधर उधर बात किया तो बोला कि आप एग्जीबिशन करिए। मैंने कहा एग्जीबिशन कहाँ होता है, बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे बड़े एग्जीबिशन होते हैं, वहाँ जाइए। तो मैंने कहा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक तो कभी गए नहीं, और मेट्रो सिटीज़ में सबसे पहले तो घर वाले भेजेंगे नहीं, और हमें तो मारवाड़ी आती है, हिंदी भी नहीं आती है, कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन 2010 में फर्स्ट एग्जीबिशन करने का मुझे मौका मिला था दिल्ली में रफी मारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और वहाँ पे जैसे तैसे करके घर वालों को मना के हम दिल्ली पहुँचे। और वो जो एग्जीबिशन था 3 दिन का था, उसमें हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हुई। और वहाँ से हमें लगा कि अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अगले
जो एग्जीबिशन होगा उसकी अच्छी तैयारी करके आएंगे। तो वापस गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना शुरू किया। और जो नेक्स्ट एग्जीबिशन था उसमें फिर हमने 4-5 हज़ार की सेल नहीं की थी, पूरी 11 लाख की हमारी सेल हुई थी। उसके बाद में हमने सोचा कि क्यों ना इसी में नवाचार किया जाए। अब तक तो हम होम फिनिशिंग के प्रोडक्ट बना रहे थे, फिर हमने सोचा कि क्यों ना गारमेंट्स बनाए जाए जिससे ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो यही सोच के हमने साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ऐसे प्रोडक्ट बनाने तैयार करने शुरू किए। फिर लगा कि लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि एप्लिक में एम्ब्रॉयडरी में पहने हुए कैसे लगेंगे। तो मैंने कहा कैसे करें, तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। मैंने कहा फैशन शो के तो नाम से ही डर लगता है कि छोटे कपड़े पहनना ऐसा फैशन शो होता है, हम क्यों फैशन शो करें। तो फिर लगा कि नहीं, हेरिटेज फैशन शो भी कर सकते हैं। तो उसी टाइम जयपुर में ही राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहाँ से हमें फैशन शो करने का मौका मिला। लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे बड़े डिजाइनर्स लोग आ रहे थे। मैं एक आर्टिजन कैसे कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगे, क्या कलर थीम लेंगे, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन हमने सोचा कि हम और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगेंगे, वो हमारी हेल्प करेंगे। तो उनको हमने जाके बोला, तो उन्होंने भी यही बोला कि रोमा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं वही आपके लिए बेटर है। तो उस समय बहुत दुख हुआ, रोना भी आया। मैंने कहा हेल्प करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी। तो यही सोच के मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, जैसा मुझे समझ में आया मैंने कलर थीम लिया। और जैसे ही हमारा प्रोडक्शन रैंप पे आया तो सारी ऑडियंस और डिज़ाइनर खड़े होकर तालियां बजाई। और वही डिज़ाइनर बाड़मेर पहुंचे, नेक्स्ट शो के लिए अपना कलेक्शन वहीं से बनाया, जिसमें बिब्बी रसेल, अब्रामन ठाकुर, हेमंत त्रिवेदी ऐसे डिजाइनर्स। और उसके बाद में मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर रही और ट्राइबल आर्टिजनों के लिए हमने काफ़ी जगह पे फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए। और उसके बाद में डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता था। उसी दिन मुझे समझ में आया कि जब भी हमारे सामने कोई भी समस्याएं आती है, अगर उसको पॉजिटिव सोच के हम आगे बढ़ते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और हमेशा ऐसी परेशानियों का सामना करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसके बाद में हमने इंटरनेशनल एग्जीबिशन किए, फैशन शोज किए। और जो 10 महिलाओं से शुरुआत हुई थी, आज 50,000 से ज़्यादा बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है। और साथ साथ में हम हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स में जो लड़कियों को परेशानी होती है, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मेरी और पढ़ाई होती तो मैं और कुछ अच्छा कर पाती। तो इस तरीके से आज भी हम स्कॉलरशिप की व्यवस्था करते हैं जिन बच्चियों को ज़रूरत होती है। स्पोर्ट्स के लिए एक हम बाड़मेर में इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं जो लगभग 10 से 15 करोड़ की लागत से तैयार होगा। वो लंदन का लॉर्ड्स स्टेडियम है, उसी की थीम पे बन रहा है। ऐसे ही बेटी बचाओ पे काम कर रहे हैं, जो बेटी के जन्म पे उनको एक गांव की एक बेटी को ब्रांड एम्बेसडर बना के 20 से 25,000 रुपए की एफडी करवा के सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ देते हैं, जिससे उनका भविष्य आज ही सिक्योर है। वो 1 साल से छोटी बच्ची के लिए होता है। तो इस तरीके से अभी जो फोक म्यूजिक है, हमारा ट्रेडिशनल जो फोक है, तो ये बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो इनको भी हम मंच दिलाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं। और हमारे सेंटर में हर रोज 2 घंटे सत्संग होती है, अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू उनको प्रमोट करते हैं। और आने वाली ये 13 दिसंबर को बॉम्बे में रुमायना रंगोत्सव के नाम से बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है। और उसमें आप लोगों को भी मैं इन्वाइट करती हूँ, आप भी आइए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। इस तरीके से अपने राजस्थान की जो आर्ट है इसको हम बचा सकते हैं। क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, मैं हार्वर्ड की स्पीकर रह चुकी हूँ। वैसे मेरा एजुकेशन ज़्यादा नहीं हुआ, 8वीं में ही मेरा स्कूल छूट गया, लेकिन मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ वहाँ पे हार्वर्ड में जाके मैंने जब स्पीच दिया तो उसके बाद में लोगों को बहुत अच्छी रुचि जगी। और वहाँ के स्टूडेंट्स ने खुद ने हाथ में सुई धागा लेके काम किया और वहाँ के एम्बेसी में बड़ा प्रोग्राम रखा गया और अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोगों को बुलाया गया। और यहाँ की कला के बारे में जब उन्होंने जाना तो ये भी बोला कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे, वहाँ पे रिसर्च करेंगे और यहाँ की कला को वहाँ के सिलेबस में शामिल करेंगे। तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस तरीके से हमारा जो राजस्थान है कला का हब है, हर गांव की आर्ट अलग है, कला अलग है। और इस तरीके से जो आज राइजिंग राजस्थान का प्रोग्राम हो रहा है, अलग अलग इन्वेस्टर आ रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो आने वाले टाइम में निश्चित रूप से हमारा राजस्थान बड़ी ऊंचाइयों पे जाएगा और हमारे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा।
और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरीके से आप हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर हाथ में काम हो और इसी तरीके से हमारी यहाँ की आर्ट को हम जिंदा रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा महिलाओं को मैं बोलती हूँ कि महिला का सम्मान करे, सपोर्ट करे, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें, अड़े रहें। Fantastic. This is Rising Rajasthan, a true example. Thank you. I now call upon three very distinguished panelists we have in our midst. We'll start with listening to the stories of these three women entrepreneurs. The first is Nimisha Vadakan, CEO and Managing Director of Aceware Fintech Services Private Limited. She is from Kerala, but I'd like her to speak about what has brought her to this place. And please, Nimisha, we are looking forward to hearing your story. Good afternoon, everyone. It's my privilege to be a part of this program, Rising Rajasthan, and to stand before you today. As a startup founder, my company, Ace Money, Aceware Fintech Services Private Limited is a startup. We started in 2020, which was during the peak COVID time. So during the COVID time, as everybody know, there was lockdown. Everybody was locked down at home. When I was also at home, and the starting of Ace Money is from a personal experience which I had during the lockdown. So like others, I was also sitting at my home with my kid who is now 8 years old, then 4 years old. And I had a personal emergency for cash. So while living in Cochin or living in some city areas, nowadays we don't have to carry physical cash with us because we have UPI systems, cards, everything for the payment. So I also didn't had physical cash with me at home. And I realized that even though the digital system is coming in, it is really important. Sometimes we need physical money with us. And as it was locked down and my kid was very small, I couldn't go out to an ATM counter to withdraw the money because ATM counters are very less sanitized places where we could not walk in that time. And going to a bank was also not possible for me because I had small kid with me. My husband was not at home that time. From this experience, I understood that I started thinking this way, okay, now we have this technology everywhere. Whatever we want, we can order it and make it deliver at our home, right? If we want food, we go for Zomato or Swiggy and it get delivered at your home. If you want something else, you can order in Flipkart and Amazon and get delivered at your home. So why can't we think of a society where the banking services are also delivered at your doorstep? So this was the beginning of Ace Money, and the first project of Ace Money, we started with a service called ATM to Home. ATM, instead of going to an ATM counter to take the money, ATM will come to you to deliver the money. So how was it possible? We developed an application, Ace Money, and also some helpline numbers who couldn't use the application, and asked them to contacting these numbers, and we appointed few executives who can actually go to the doorstep and deliver physical money there. They will be coming with a micro ATM device, which is a calculator size device where you can swipe your card and the money will get delivered at the doorstep. We started this in Cochin, which was again a city kind of area, urban area. And after the COVID time, we noticed that most of the requests for the financial services came from the core rural sector of the country, not from Cochin.
So we couldn't actually deliver everywhere because we didn't have rural presence at that time. And that is when we realized that the need for financial services is more in the rural sector. That is tier 3+ cities than in the urban areas, because urban we all have access to many facilities. But coming to the rural areas, going for a bank or doing a bank transfer is a half-day job for them. Going to the bank, filling all the forms, submitting it. If they want to transfer money to somebody, it is a half-day job for them. So how can we simplify this? We always speak of financial inclusion, right? So, and India is very fast moving in case of financial inclusion as well. And so 70% of India's population is under financial inclusion. They are included in the financial economy of the system. Still 30% are left behind. So when we say the term financial inclusion, actually a complete financial inclusion of a person will consist of 4 things. Mainly, first one is they should have a basic bank account. Nowadays, that has came a significant increase in that first point, basic bank account. Everybody is having, because of the Jan Dhan Yojana, Prime Minister's Jan Dhan Yojana scheme, most of us are having the first point, that is the basic account. The second one is the easy access to transfer and withdraw the money which is in the bank account. You have a bank account, you have money in the bank account, but that will not serve. So if we want to withdraw the money or transfer the money to someone, there should be an easy access. The third one is each one of us should have an access to a loan or a micro loan or a credit so that we can move forward. And the fourth one is every one of us should have at least a small health insurance coverage. When all these 4 factors come together, we say that that person is a financially included person. So as I told you, the first point is covered by PM's Jan Dhan Yojana mission, and we act on the second part, that is making the financial services little bit easier for the rural people. We do this by, we started doing this by appointing some business correspondent. We identified business correspondents. In core rural areas, we know that everywhere bank will not be there. They will have to travel 5 to 10 kilometers to go to their nearby bank. So what we did is, in their locality, there will be a small merchant or a small aspiring entrepreneur who want to start some business of their own. So we identified them. We started training them how to provide this micro ATM service, how can help them with transferring cash from one to another. So all these things we started training the business correspondents, and this business correspondent became the financial service provider for that particular rural area, which will actually give more access to the financial services to the rural people. My husband and I started the company, so we always look forward to women participation in our company. In our company, I am very happy to say that more than 60% are women employees, as well as in the women entrepreneurs. We have now developed